Yes, ma'am. All right. So yeah, again, it's a very recent topic, and also I was thinking that I take up the yesterday's Ahmedabad crash up, but I believe a lot of more informations are about to come. So I'll take that up in the next class, and instead of that I have taken up the another topic related to Pakistan. So see, first of our topic is related to जो भी असम में foreigners का deportation चल रहा है, that thing, and the second topic is uh, all the sanctions committee, एक sanction committee का uh, पाकिस्तान को हेड बनाया गया है और उनका वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो पाकिस्तान हैज ऑल्सो बीन मेड अ को चेयर ऑफ वन ऑफ द working committee, and then ADB has provided some amount of loan to India as well as Pakistan. So today we are going to basically discuss two topics. One is related to Assam का जो भी foreigners का deportation चल रहा है, what basically is that, and the another topic that we are going to talk about is जो भी पाकिस्तान को loan provide किया गया है by the ADB bank. We are going to discuss the details of ADB bank, and other than the sanction committee का जो भी उसको part बनाया गया, we are going to discuss that in detail. Are we clear about today's agenda? Yes, ma'am. All Yes, sir. Actually, I'm joining your session for the very first time, so just wanted to know that will I get this PDF or do I have to make my own notes? uh, Okay, thank you. just to add to that, you'll get the PDF, but there are some additional points that I keep on adding, which is not sometimes it's not mentioned in the PDF. So you're requested to just note those specific 1 or 2 points. It won't be much, but it can be just 1 or 2 points. That's it. Sure, sure, ma'am. Sure, thank you. All right. So yeah. Before I begin with Assam का foreigner deportation topic, just tell me कि एक country है जिसमें immigrant से related पूरे protest चल रहा है, very main country. I believe all of you might be aware of that. USA. Yeah. All right. So that also I'm going to talk about in the next class. पर आज के लिए Assam is the main topic. So see, अभी असम में हाँ, अभी असम में मेन जो इनके सीएम है मिस्टर हेमंत, उनकी काफी सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट वाज दैट ही सेड कि जो लोग द people who are even mentioned in the NRC, even if they are their name is mentioned in NRC, that doesn't matter. We can still basically deport them, and we can basically still say that these people are the illegal immigrants. Now, if all the people who have joined my previous classes, you might be knowing what is NRC, right? Yes. So see, those who have joined it for first time, you can refer to that particular PDF. You'll be provided with that. But just to provide a major distinctive point between NRC and NPR. So देखो, NRC is National Register of Citizens and NPR is related to the residents, national basically document of all the residents. So the main difference between NRC and NPC is कि NRC में हम document करते हैं इंडिया के जो भी citizens हैं. In the NPR we document all the residents. So सबसे पहले जब census होता है, तो सबसे पहली जो document consolidate की जाती है, that is NPR. We are first going to consolidate all the residents of India, and then we consolidate all the documents of citizens present in India. That is the main distinguishing factor. ठीक है. अब उसके बाद या देन हाँ, तो बेसिकली असम के सीएम ने ये कहा था कि अगर एनआरसी में आपका नाम है भी, दैट डजंट मैटर, वी कैन स्टिल डिक्लेयर यू एज अ इलीगल इमिग्रेंट इन असम. नाउ एनआरसी सबसे पहले नेशनल वाइड एनआरसी 1951 में बनाया गया था, बट आफ्टर दैट सम स्पेसिफिक स्टेट्स हैव अपडेटेड देयर ओन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस. सो 2017 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम शुड काइंड ऑफ update its NRC, and in the year 2019 updated final draft of Assam's NRC was provided, right?
अब मेन इशू इसमें ये था कि उन्होंने जो एनआरसी बनाई थी उसमें ऑलमोस्ट 19 लाख पीपल वर काइंड ऑफ लेफ्ट आउट. That's the main issue. And still what the CM of Assam is basically saying, he's saying ki a lot of people have got into this particular list of NRC through unfair means, through approach or through unfair means. So this particular NRC which they have prepared themselves, their own officials have prepared, CM is saying that this is not something that is credible, and we can't basically believe this particular uh, record. So one more thing, that this particular National Register of Citizen that has been prepared by Assam, ये जो रजिस्ट्रार जनरल को नोटिफाई करनी होती है, तो जो इंडिया का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, they have basically not notified this particular document, and so this particular NRC of Assam doesn't has any official validity. Official validity तो इसको कोई मिली नहीं है. Along with that, even though CM of Assam is being questioned कि आपके खुद के officials ने particular document बनाई है, still you are saying that this is not a document that is really credible. So he's even though he's being questioned on that, but still what he has come out with that नाम इसमें NRC में है, फिर भी हम किसी इंसान को illegal immigrant declare कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज के टाइम पे अगर किसी को भी इलीगल इमिग्रेंट आपको डिक्लेयर करना होता है, देन यू हैव टू बेसिकली डिपोर्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन टू द कंट्री फ्रॉम वेयर बेसिकली ही हैज इमिग्रेटेड फ्रॉम टू इंडिया. तो उसमें आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल का काम रहता है. तो व्हाट द सीएम ऑफ असम इज नाउ सेइंग दैट will continue with the 1950 का एक्ट, दैट इज इमिग्रेशन एक्सपल्जन फ्रॉम असम एक्ट. अभी ये इतने यूज में नहीं है. सो सी October 2024 में when Supreme Court was basically looking at the constitutional validity of Section 6 Clause A of the Citizenship Act 1955, तब Supreme Court ने कहा था that this is an act जो हालांकि यूज में नहीं है, but it's not illegal. This particular section 6 Clause A that I'm going to discuss in the further slides, ये है क्या. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that this act is this section is still valid, section 6 clause A. तो उसके बाद what the CM is saying कि आज के टाइम पे हम फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू किसी की भी हमें नेशनैलिटी को if you have to determine someone's nationality, that we do through foreign tribunal. But what we are moving towards, what the CM is saying कि will leave this particular practice, the present practice behind, and will continue with this particular act, Immigrants Expulsion from Assam Act. अब इसमें problem क्या है, that we are going to discuss. All right. So we are done with the slide. I told you that Supreme Court का October 2024 का decision था, where they basically said that this particular Section 6 clause of Citizenship Amendment Act 1955 still holds valid. All right. Now, if we are done with the first slide, I'll move to the second slide. Yes, yes, sir. So see, I'll be asking that a little low key if you're clear with that, but after every slide, because I'll be moving to new one, just that. अगर यहाँ पर अभी तक कोई doubt है, just ask that. I'll move to next slide. No doubt. All right. ठीक है. अब now we are going to talk about कि इसका ये main section है क्या. So see, we all know कि जो Article 5 to 11 है of the Indian Constitution, that basically talks about all the provisions related to citizenship, right? But there are some aspects that it doesn't talk about. जैसे कि अगर कोई भी illegal immigrant है, what will be the basis of declaring a particular person as an illegal immigrant? अगर कोई person illegal immigrant आप उसको declare कर भी देते हो, तो who all have the authority of declaring a person illegal immigrant? And if a person is found to be illegal immigrant, what all are the provisions for deportation? So for that particular thing, see section 11, Article 11 of Indian Constitution allows Parliament कि आप citizenship से related acts बना सकते हो.
then Indian Parliament has made this particular act, Citizenship Act 1955, जिसका Section 6 Clause A is of main importance here. See, this particular Section 6 में this particular clause was added in the year 1985. Originally जब ये act आया था, it was not there at that time. 1985 में इसको add किया गया था. अब इसमें देखो basically होता क्या है, Section 6 Clause A basically क्लासिफाई करता है फॉरेनर्स को. Is my annotation visible, everyone? Yes, ma'am. All right. So the main work of Section 6 Clause A is that it basically classifies the foreigners. इसने basically किया क्या, that I'm going to divide foreigners into 3 sections. वो foreigners जो 1 जनवरी 1966 से पहले आए, वो foreigners जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच के टाइम पीरियड में आए, and those foreigners that came after 25 March 1971. We basically classified foreigners in these particular 3 categories. और first category में हमने क्या किया कि जो foreigners 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं, they'll be treated as Indian citizens. Clear and simple. इन लोगों को हम इंडियन सिटीजन मान लेंगे. उसके बाद हमने कहा कि ये जो 1 जनवरी 1966 का टाइम पीरियड और जो 25 मार्च 1971 का टाइम पीरियड है, इनके बीच में अगर कोई फॉरेनर आया है तो उस पर्टिकुलर फॉरेनर को 10 साल इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ सिटीजन. सिंपल. और उसके बाद सी देयर वाज वन मेजर सिग्निफिकेंट event that took place in 1971. उसके बाद a lot of people basically immigrated in India. What was that particular event? The Sorry. Invasion of Bangladesh. Yeah. So a lot of basically refugees started coming in India when formation of Bangladesh took place due to all the violence and stuff. So 25 March 1971 के बाद हमने we were basically like कि India can't tolerate that amount of immigrants, and also it wasn't like all the civilians who are coming in the country in the form of immigrants. There were lot of militant people who were also taking advantage of this situation, and they were basically coming in India. So we basically decided कि 25 March 1971 के बाद अगर कोई भी आएगा, they will be declared as illegal immigrant and they'll be deported back to their country. That's it. That is what Section 6 Clause 8 of Citizenship Amendment, Citizenship Act 1955 deals with. Clear? Yes, ma'am. Okay. I told you that it also deals with the issue of illegal immigrants जो बांग्लादेश से असम तक आ रहे हैं. And then there was this one particular I told you कि this Section 6 Clause A was not originally in the Citizenship Act of 1955. It was added in 1985. So see, there was one important kind of agreement that took place in 1985, that was Assam Accord, and उसी के बाद इसी accord के through ये decide हुआ था that this particular kind of reassurance should be provided to us कि 1971 के बाद जो भी असम में घुसेगा they will be declared as illegal immigrant. So through this particular accord only, इसी के बाद जब ये 1985 में साइन हुआ था, this particular clause 6 Clause A was added in this particular act. I told you this already. Now, before, let's move to Assam Accord पहले. I told you कि 1971 से influx of lot of immigrants started in India due to formation of Bangladesh. पर 1980s तक ये पूरा immigration का process चल ही रहा था. तो that was the time when we were discussing the issue of Manipur and we talked about the Meitei people and the Kuki-Zumi people, right? I told you that the main issue of the tribal people here is that all the immigrants are coming in from
the neighboring countries, और हम जो ट्राइबल पीपल है, वी द ओरिजिनल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, हम ही माइनॉरिटी में जाते चले जा रहे हैं ड्यू टू दीज पर्टिकुलर इनफ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स. एंड दैट वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ कंसर्न इवन इन असम. 1980s में जब बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा था, एट दैट टाइम दे काइंड ऑफ थॉट दैट समथिंग नीड्स टू बी डन regarding it, and there was this anti-foreigners movement that took place. Or OCK regarding this particular Assam Accord was signed in the year 1985 between the central government and all Assam Student Union. That was the main force behind this anti-foreigners movement. Yeah. So that we have already discussed कि इस पर्टिकुलर अकॉर्ड में ये कहा गया था कि 1966 से पहले जो भी लोग आएंगे, दे शुड बी प्रोवाइड सिटीजनशिप, पर जो 1966 से 71 के बीच में आएंगे उनको 10 years के लिए पहले रिसाइड करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज सिटीजनशिप. और इस डेट के बाद तो अगर कोई भी आएगा, दे विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स. नाउ सी, मैंने वहां पर स्पेसिफिक डेट्स बताई थी सेक्शन 6 क्लॉज ए में, बट हियर इट्स द जब ये अकॉर्ड साइन हुआ था तो रफ टाइमलाइन प्रोवाइड की गई थी. And when we formed that particular clause of section 6 clause A, a particular timeline was then formulated. यहाँ पर सिर्फ rough timeline दी गई थी, और इस particular accord के through we basically added section 6 clause A in the Citizenship Amendment Act 1955. उसके बाद होता क्या है, ये सब हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, एंड आई टोल्ड यू कि इसके बाद भी इतनी सेटिस्फैक्शन ट्राइबल लोगों या फिर वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको नहीं मिलती है. उसके बाद 2005 में दोबारा से सेंटर और असम गवर्नमेंट और AASU, आई टोल्ड यू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इनके बीच में दोबारा से एक अग्रीमेंट साइन होता है. एंड थ्रू दैट अग्रीमेंट इट वाज डिसाइडेड कि NRC जो है 1951 में जो फॉर्मुलेट हुआ था आफ्टर द सेंसस, दैट शुड बी अपडेटेड फॉर असम नाउ. उसके बाद the government of Assam took up the work of kind of updating the NRC, but then at that time a lot of violence erupted and the process was left in between. उसके बाद दोबारा से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि now is the time that Assam should update its NRC, और उस सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अंदर ही 2019 में it was finally updated and a final draft was provided. That was it. Come back here again. Yeah. Huh. When we talk about all the disadvantages of this particular section 6 clause A, so already it's being misused in the sense कि it's not really, India में literacy इतनी है नहीं, a lot of people are illiterate, and also Assam is a kind of place जहाँ पर natural disasters आने के प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं. सो जब हम इस बारे में, इस टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं कि अगर इस टाइमलाइन के बाद वाले लोगों को वी आर गोइंग टू कंसीडर इलीगल इमिग्रेंट्स, सो इट्स ऑल्सो बीइंग स्पेक्यूलेटेड कि बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं ये प्रूव करने के लिए कि हम इस टाइम से पहले से असम में रहते हैं. बहुत सारे लोगों के नेचुरल डिजास्टर्स में डॉक्यूमेंट्स खो गए होंगे, बट नो सच एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड टू एनी काइंड ऑफ पर्सन. और जो लोग, even if they have been living in Assam before 1971, they are basically declared illegal immigrants. That's it. Also, इसी के regarding Feb में भी this particular topic was in news because Supreme Court asked the Assam government कि a lot of people were basically being put in the detention centers. That was the time Supreme Court pointed out कि you are basically detaining the people, और ऐसे लोग भी हैं आपके detention centers में who have been there since last 6 years. Specifically that was mentioned, and this is something kind of illegal. Are we clear till here? Do you Yes, ma'am. understand Assam Accord? Yes, ma'am. Others? Yes, ma'am. All right, just a minute, I'll be back.
Yeah. So now, yeah. Uh, अगर आपको किसी भी फॉरेनर को डिटेन करना है तो बेसिकली इंडिया में दो प्रोविजंस होते हैं. वन इज द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के थ्रू एंड अनदर इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1980. ये दो पर्टिकुलर एक्ट होते हैं जिसके थ्रू यू कैन बेसिकली डिटेन अ पर्टिकुलर फॉरेनर. एंड coming to that again, we discussed this point. Now let's come to the foreign tribunal. I told you कि आज के टाइम पे जो सिस्टम फॉलो किया जाता है दैट इज कि अगर there are speculations that a particular person is an illegal immigrant and he or she is not the citizen of India. So the local authorities are gonna send the information of that particular person to the foreign tribunal, and they are gonna come out with the decision कि एक उस पर्टिकुलर पर्सन की नेशनैलिटी क्या है. बट स्टिल जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ ये कहता है कि ये पर्सन इंडिया का नेशनल है. दे आर नॉट गोना टेल कि ये पर्टिकुलर इंसान बांग्लादेश का नेशनल बांग्लादेश का सिटीजन है या फिर पाकिस्तान का सिटीजन है. जस्ट द इंफॉर्मेशन फॉरेन ट्रिब्यूनल कम अप विद इज दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट द national or the citizen of India. Now the problem with that is कि अगर आपको किसी भी इंसान का डिपोर्टेशन करना है उसके लिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए वो इंसान किस पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल है, किस पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन है. एंड द अदर थिंग इज दैट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन to be deported to their particular country agar if they're not sure कि that particular person who is being deported is a person of Bangladesh. So these are some of the problems that are highlighted with regards to the foreign tribunal. Now, foreign tribunal is a quasi judicial body. That's not important, but इसको establish किसके अंडर किया गया, that gets important. Foreign tribunal order 1964 के अंडर इसको basically establish किया जाता है. And right now foreign tribunal सिर्फ असम में है, and we have approximate almost 100 tribunals, foreign tribunals in Assam. इस पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया जाता है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर को इशू किया जाता है सेक्शन 6 ऑफ Foreigners Act 1946. Now see, this particular order is different from the Foreigners Tribunal Act 1941. So just keep in mind to avoid the confusion that this is a order and this is an act. और इसको फॉरेन ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1964. दैट्स इट. ठीक है. उसके बाद आई टोल्ड यू ऑलरेडी द पर्पस की लोकल अथॉरिटीज को अगर लगता है कोई भी कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द सस्पेक्टेड फॉरेनर, दे कैन बेसिकली forward the information to the foreigner tribunal and they'll just come up with the information that if he or she is the citizen or not. I told you कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आज के टाइम पे सिर्फ असम में ऑपरेट करते हैं. दो दे आर नॉट, MHA ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं कि फॉरेन ट्रिब्यूनल बाकी इंडिया में नहीं ऑपरेट कर सकते. MHA when it came up with the notification, it came up with the notification that foreign tribunals can be formed in all the states, but specifically फिर भी ये आज के टाइम पे सिर्फ असम में ही ऑपरेट करते हैं. Right. Then इसकी कॉम्पोजिशन, जस्ट रिमेंबर कि अपॉइंटमेंट किसके अंडर होते हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1941 एंड द ऑर्डर 1964. और कौन कौन हो सकता है, जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, फिर सिविल सर्वेंट हो सकता है जिसके पास लीगल एक्सपर्टीज हो. उसके बाद दो टाइप के केसेस को ये हैंडल करता है. सबसे पहले अगर किसी बॉर्डर पुलिस को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंसान सिटीजन नहीं है या फिर इलीगल इमिग्रेंट या फॉरनर है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है. That are the two particular cases this particular tribunal handles. That's it. That was it for the foreign tribunal. Now, अब किसके what is the kind of system that the CM of Assam wants to basically bring in? We are going to talk about that. This I have already mentioned. Ki it's not that MHA has restricted this particular provision or this particular foreign tribunal only to Assam, और भी states बना सकती हैं, but it's that कि और किसी state ने बनाया नहीं है. Yeah, we are done till here.
आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि असम में 100 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं और इनकी बेसिकली फॉर्मेशन स्टार्टिंग हुई थी 2005 से, मतलब मेजर मेजर जितने भी ज्यादा फॉरेन ट्रिब्यूनल बने हैं दैट वर फॉर्म्ड इन 2005. I told you about the 2024 judgment of the Supreme Court regarding upholding the Section 6 clause of Citizenship Amendment Act. Now, अब ये जो भी फॉरेनर्स का डिपोर्टेशन हो रहा है, इट्स नॉट दैट कि इसके अगेंस्ट कोई लोग नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू दिस पर्टिकुलर immigrant deportation that is being done, because almost 300 people have been deported to Bangladesh already by Assam. ठीक है, it's not that कि इसके रिगार्डिंग कोई opposition नहीं है. तो on June 2, though it's not important from CLAT's perspective, but just to give you idea, already all BTC minority student union was a particular union जिसने petition file की थी Supreme Court में against this particular deportation thing, but that has been quashed by the Supreme Court. And as far as I believe, some other organization or some other person are going to come up with this similar petition again, and at a time Supreme Court will have to accept this particular petition, right? अब जो No, no, sorry. No, sorry, I forgot. Just, take it back. all right, then I told you that now the CM of Assam wants to do away with this particular system of foreign tribunal. And what kind of system does the CM of Assam now wants to come with is this particular act, Immigration Expulsion from Assam Act, that was basically enacted on 1 March 1950. And this is kind of act that basically does away with all the judicial requirement or all the judicial proceedings. कोई भी judicial proceedings नहीं होगी. And even a person with the rank as low as district commissioner, well, it's not even that low, but still even the district commissioners can order this particular expulsion orders directly. कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोई फॉरेन ट्रिब्यूनल की कोई नीड नहीं रहेगी. अगर किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंसान इलीगल इमिग्रेंट है, देन दे कैन डायरेक्टली इशू दिस एक्सपल्शन ऑर्डर. दैट्स इट. अब ये पर्टिकुलर एक्ट को एनैक्ट क्यों किया गया था? सी 1950 में एनैक्ट किया गया है. एट दैट टाइम वी हैड सिमिलर कंसर्न्स कि 1947 की पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग असम में इनफ्लो कर रहे थे, एंड ड्यू टू सिमिलर कंसर्न्स दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज enacted basically. That's it. Yeah, and I have mentioned this point, but to reiterate again that this particular act, but it's applicable across all the India. And I told you that it has not been in use much. It was only after the October 2024 decision of the Supreme Court that it was basically held that this particular act is still valid, and Supreme Court then upheld this particular section. That was it. If you have any doubt in this particular topic, just go ahead and ask. No. Now, here I have covered, I told you that section article 11, 5 to 11 of the Indian Constitution talks about all these citizenship related aspects. जो कुछ बच गए थे that have been covered in the Citizenship Amendment Act of 1955. इसमें one of the most important point is we have already discussed article 11 in my previous slide कि article 11 of the Indian Constitution basically allows parliament कि आप citizenship से related कोई भी legislation बना सकते हो या फिर कोई भी act बना सकते हो. Now India only allows single citizenship. Now anyone has any idea कि single citizenship का मतलब क्या है? Yeah, single citizenship means that you are basically given the citizenship of a nation, not of a particular state. Yeah, well, just to add a bit, single citizenship का basically एक मतलब ये होता है कि let's say a person is a citizen of India. There are a lot of ways
you can gain the citizenship of India. That one of the sections of Citizenship Amendment Act basically mentioned that naturalization and all the stuff. Some ways to get the citizenship of India. But if you are a citizen of India and then you take up the citizenship of USA, then you basically lose your citizenship of India automatically. It's not like some of the countries that offer double citizenship, that you can be a citizen of India. Uh, तो हर एक स्टेट का कोई खुद देंगे. ऑल द इंडिया इज वन पर्टिकुलर यूनाइटेड कंट्री. उसकी सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, दैट यू विल बी आइडेंटिफाइड ओनली एज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. दैट्स इट. Is there any doubt till this topic? No, ma'am. No, ma'am. Anyone else, the people who have joined like today for the first time? Yeah, see, here it's mentioned that by barring the citizen of people who is voluntarily acquiring citizenship of any other nation. If you are acquiring, let's say, citizenship of another nation like USA, you'll automatically lose the citizenship of India. आप सिर्फ एक ही country के citizen हो सकते हो. That's it. So yeah. Now, though we have discussed the composition of UNSC again, but because I was coming up with the topic, I've mentioned this particular slide again. So इसमें बस ये देख लो कि UNSC में members कितने होते हैं. UNSC सबसे पहले is one of the 5 most important bodies of UN, and UNSC के members होते हैं 15, जिसमें से 5 are permanent members and 10 are non-permanent members. 5 members जो हैं, there are China, France, Russia, UK and US. बस यही जो countries हैं, there are 5 permanent members and they enjoy veto power. Now with regards to veto power, it's like कि अगर कोई भी decision, कोई भी resolution UN में any particular country has come up with, and even if one of the permanent member refuses to go ahead with that particular resolution, that particular resolution can't be passed in the UNSC. That is the veto power these particular 5 countries enjoy. That is it. उसके बाद 10 countries are the non-permanent members जिनका election हर 2 साल बाद होता है. Now just tell me, अभी 3 जून को ही 5 members have been elected as the non-permanent members. Am I correct? Yes, ma'am. I told you that 10 non-permanent members हैं, हर 2 साल बाद उनका election होगा. And अगर किसी particular country का ये जो election होता है, इसमें if a particular country has to become the non-permanent member of UNSC, it has to have 2/3 the favor. See, जितने भी members उस time पे member countries, we have 193 member countries, उस time पे पर जितने भी present हैं और जितने भी countries vote कर रही हैं, उसका 1/3 अगर उस particular country की favor में है, then only that particular country can be appointed as the non-permanent member. So basically you need to have 129 votes minimum. Secret ballot के through ये particular election होता है, that gets important. You can be basically asked that what kind of election take place in UNSC, that is secret balloting. All right. Now just tell me, ki India, when was India the non-permanent member of UNSC? Ma'am, in 1950 and 1951. See, I have asked the recent year कि जब recently India UNSC Okay. permanent member. 2021 to 2022, I think. Yeah, so it was 2021 where basically India was elected. Now, आज के time पे, which one country is the non-permanent member, which is the rival of India, and they are
like gonna take up the issue. No, just that it's the rival country of India, and it has been elected as the non-permanent member. Pakistan. Yeah, Pakistan. ठीक है. उसके बाद, see this, don't refer to this particular information. I'm telling you beforehand. Yeah. अब नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया टाइप ऑफ होता है कि 2 ईयर का उनका टेन्योर होगा एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. अब इनका एक क्राइटेरिया होता है कि जितने भी 10 परमानेंट मेंबर्स होंगे, सो इट्स ऑलवेज दैट कि ये लोग तो परमानेंट हैं ही हैं, बट द non-permanent members that we have in UNSC, there needs to be a kind of regional equality in all the permanent, non-permanent members. For that sake, we need to have Africa से 3 members होने चाहिए, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, एंड वेस्टर्न यूरोप और आसपास के जो रीजन है वहां से 2 members और ईस्टर्न यूरोप से 1 member. So this particular numbering that these amount of member needs to be from these areas is based on the population and on the area, so that all the people across world have proportional representation in UNSC. That's it. Yeah, this particular point is also important. I mentioned कि 5 main organs in UN and UNSC is one of that organ जिसके decisions are binding, and the members who are the members of UNSC are basically obliged to implement all the resolution and all the decisions. That was it. Yeah. Then I said कि 3 जून को 5 new non-permanent members have been added, जिनका tenure basically रहेगा कि they are going to start their tenure from January 1, 2026 and they're going to end their tenure in the year 2027 की ending में. 5 जो countries recently add हुई हैं are these particular countries: Bahrain, Colombia, Congo, Latvia, and Liberia. Now there's one particular information important here कि Latvia is a particular country जिसका ये पहला टेन्योर है. मतलब बिफोर दिस Latvia has never been a non-permanent member in UNSC. उससे पहले ऑलरेडी जो 5 members non-permanent members UNSC के हैं, they are Algeria, Guyana, South Korea, and Slovenia. अब, oh sorry, I mentioned it wrong. So these new countries have basically replaced these particular countries, और जो अभी भी पिछले साल इलेक्ट हुई थी पर जो अभी भी नॉन परमानेंट मेंबर्स है, दे आर डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया. पाकिस्तान इज द मेंबर है. अब एक बेसिक सा प्रोविजन होता है कि जितनी भी कमिटीज होती हैं यूएनएससी में, तो एवरी non-permanent member is gonna basically head one particular sanction committee of the UNSC, right? So for that sake, January में like these are some reports कि though these decisions must have been finalized by the time January 2025, पर ये decisions अभी आ रहे हैं जून 2025 में, क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि हमें 4 बेसिकली कमिटी हमें चार सैंक्शन कमेटी का हेड बनना है, पर उसमें से दे हैव बीन मेड ओनली हेड ऑफ वन पर्टिकुलर सैंक्शन कमेटी. एक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और इसका एक का को चेयर बनाया है, पर जो उसने डिमांड की गई थी उसमें से उसको सिर्फ एक मिल गया. एंड ऑल्सो आई सेड कि वैसे तो ये जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए था, बट इट वॉज डिलेड टिल द टाइम जून 2025 बिकॉज ऑल द परमानेंट मेंबर्स वर काइंड ऑफ reluctant to provide any particular committee to Pakistan. Is that clear till here? Yes, ma'am. All right. Now, Pakistan ka tenure is scheduled to finish in the year 2026. Come here again. Yeah. I said Pakistan demanded that it want to chair basically
4 committees, and which were all 4 committees जिसकी उन्होंने chairmanship demand की थी. It was 126 sanction committee, 540 sanction committee, and 1988 Taliban committee and CTC committee 1973. अब इसके आगे I've added कि 1373 की जो counter terrorism 1373 जो counter terrorism committee that was chaired by India in 2022 and during the tenure of 2011 to 2012. उसके बाद, because we are talking about the chairmanship in any aspect of current affairs, it gets important कि India की last non-permanent membership कब थी. That started in the starting of 2021 and it ended in the ending of the year 2022. So basically 2 years. और उसके टाइम पे हम किन किन कमिटीज के चेयर थे, that gets important. 1988 Taliban Sanction Committee, 1970 Libya Sanction Committee, and 1973 Counter Terrorism Committee. That gets important. उसके बाद I told you 4 committees की इन्होंने डिमांड की थी that we want to chair these particular 4 committees, पर उसमें से इनको मिली क्या क्या. Let's look at that. 1988 तालिबान कमिटी के चेयर बनाया गया इसको, that's it. और CTC का वाइस चेयर बनाया गया है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि सिर्फ एक कमिटी दी गई है, दैट मीन्स कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कमिटी का चेयर बनाया गया है. 1373 CTC का सिर्फ वाइस चेयर बनाया गया है, दैट्स इट. उसके बाद नाउ दे वो इससे पहले पाकिस्तान के पास जब भी किसी पर्टिकुलर कमेटी का उनको चेयर बनाया गया है, it has basically tried to point all its gun towards India, right? 2013 में इनके पास एक पर्टिकुलर कमेटी के इनको चेयर बनाया गया था, and at that time they brought up the issue of Kashmir. अब there are speculation that India should worry about all the committees जिनका इन लोगों को चेयर बनाया गया है, but then it's being said कि India doesn't need to worry that much क्योंकि कम है. मैंने कहा था 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर बनाया गया है. अब इसमें को चेयर भी हैं एंड इसके वाइस चेयरमैन हैं गुआना एंड रशिया, 2 पर्टिकुलर कंट्रीज, एंड these countries are basically the friends of India. And here in these particular committees, sanction committees, the decisions are taken by consensus and not by any unilateral power. सो बेसिकली अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को चेयर बना दिया गया है, इट्स नॉट दैट दे कैन इसका कोई मेजर इम्पैक्ट इंडिया पर होगा. एंड ऑल्सो इट्स बीइंग सेड दैट इट्स क्वाइट अ पैराडॉक्स कि इंडिया पाकिस्तान जिसमें खुद इतना टेररिज्म है, दे हैव बीन मेड चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शन कमेटी, जिसमें मेजर इसका पर्टिकुलर कमेटी का रोल क्या रहता है कि जितने भी तालिबान के प्रॉब्लमेटिक इंडिविजुअल्स हैं उन पर ट्रैवल बैन या फिर एसेट फ्रीज जो कुछ भी लगाया गया है, इट्स थ्रू दिस पर्टिकुलर सैंक्शन कमेटी ये देखा जाता है कि ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग फॉलोड, दैट्स इट. अप्रोक्सीमेटली तालिबान सैंक्शन कमेटी में 130 इंडिविजुअल्स हैं, and those are the individuals, Talibani individuals who can pose threat to the peace of Afghanistan. इस पर्टिकुलर सैंक्शन कमेटी को रेजोल्यूशन 1988, this is the resolution number जो that is mentioned here, and इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया था 2011 में. That's it. That was about the Taliban sanction committee. Is that clear till here? Yes, ma'am. All right. Now also because again we are talking about the membership of the non-permanent members. India कब non-permanent members है, just have a basic idea कि कौन से years में India non-permanent member है, and also add one more year here, 2021 to 2022. That's it. हाँ, one more thing. Just tell me कि जुलाई में यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप किसके पास रहेगी?
Is the screen visible, everyone? Yes, ma'am. So I was asking कि जुलाई में प्रेसिडेंटशिप अगेन पाकिस्तान के पास रहेगी, और प्रेसिडेंटशिप का काम बेसिकली ये होता है कि हर वी आर 15 मेंबर्स, सो अक्रॉस